गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है पावर्स ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी ईडी की पावर्स को एंडोर्स करते हुए कहा है कि सेंट्रल एजेंसी जो है ईडी वो किसी को भी इंफॉर्मेशन के लिए बुला सकती है। तो ईडी है क्या? डोमेस्टिक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो कि इकोनॉमिक लॉज को इन्फोर्स करने के लिए, इकोनॉमिक क्राइम्स को फाइट करने के लिए इंडिया में बनाई गई थी। 1956 में इसको पहली बार बनाया गया था और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के जो है प्रोविजंस को पहले ये देखती होती थी। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ऑफ कोर्स आती है ये। लेकिन अब इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो तीन की लॉज को देखना है, फेमा, पीएमएलए और फेवा। ठीक है, जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 में आया है। अब पीएमएलए क्या है? 2002 में ये एक्ट पास हुआ था और सेक्शन 3 इसका कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है क्या, उसको डिफाइन करता है। ठीक है, कि कोई भी अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है असिस्ट करता है, इंडल्ज होता है किसी भी पार्टी के साथ और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को जो है अनटेंटेड प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग है। ठीक है, तो पीएमएलए को 2009 में और 2012 दोनों में अमेंड किया गया था और फिर ऑफ कोर्स फाइनेंस एक्ट्स के थ्रू भी इसको 15, 18 और 19 में अमेंड किया गया है। अब ईडी के पास पावर्स देखें अगर हम पीएमएलए में, तो सेक्शन 48 और 49 जो है वो इन्वेस्टिगेशन की पावर्स देती है ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर। सेक्शन 50 सब सेक्शन 2 कहता है कि ईडी के पास पावर है कि वो किसी भी पर्सन को समन कर सकती है। ठीक है, और सेक्शन 50 का जो सब सेक्शन 3 है वो कहता है कि इंडिविजुअल जिसको समन किया गया है उसको वो बाउंड है, उसको अटेंड करना पड़ेगा वो समन, या अपने खुद या फिर अपने ऑथोराइज्ड एजेंट्स के द्वारा। ईडी के पास स्पेशल पावर्स होती है कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी की भी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि ईडी ऑफिसर्स ऑफ कोर्स पुलिस ऑफिसर्स तो नहीं है, इसलिए वो अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ऑफ कोर्स उनके जो समन्स हैं उनके पास पावर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करने के लिए जो है वो ईडी की जो पावर्स हैं उसको एंडोर्स किया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंडिया रिजेक्ट्स चाइनाज रीनेमिंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने जो चाइना द्वारा किया गया अभी अरुणाचल प्रदेश के कुछ रीजन्स का नामकरण है उसको एक तरह से रिजेक्ट किया है। तो अगर हम देखें तो इंडिया चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन का डिस्प्यूट है ईस्टर्न सेक्टर में, और मैकमोहन लाइन 1913 और 1914 के टाइम पीरियड में शिमला में जब चाइना, इंडिया और तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स मिले तब हेनरी मैकमोहन के टाइम पर शिमला कॉन्फ्रेंस में ये लाइन जो है वो बनाई गई थी, जो कि 890 किलोमीटर की लाइन है लगभग। तो मैकमोहन लाइन जो है ब्रिटिश कंट्रोल को उसने नॉर्थवर्ड्स जो है वो पुश कर दिया, और तवांग और कई तरह के तिब्बतन एरियाज़ जो है वो ब्रिटिश के पास आ गए, ब्रिटिश एम्पायर के पास। लेकिन चाइनीज़ रिप्रेजेंटेटिव्स ने उस समय तो हाँ कर दिया, बट बाद में जो है उन्होंने वो इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया। चाइना जो है वही एग्रीमेंट का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि इंडिया जो है वो अरुणाचल प्रदेश को ऑक्यूपाई करके बैठा है, जिसको वो सदर्न तिब्बत कहते हैं। चाइना जो है वो हिस्टोरिकल टाइज जो है जो मोनेस्ट्रीज ऑफ तवांग और लासा के बीच में है उसका जो है वो हवाला देते हुए जो है वो क्लेम करता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। तो इंडिया चाइना के हम बॉर्डर डिस्प्यूट में देखें तो अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है वो लार्जेस्ट डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और चाइना के बीच में। 1962 के वॉर के टाइम पर तो पीएलए ने इसे ऑक्यूपाई भी कर लिया था, लेकिन फिर उन्होंने खुद ही यूनिलैटरल सीज फायर जो है वो अनाउंस करके उस एरिया से विड्रॉ कर लिया था कि वो मैकमोहन लाइन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो अपना क्लेम इस टेरिटरी पर जो है वो शुरू से जो है वो डालते हैं और कहते हैं कि पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का पार्ट है। अब रीनेमिंग जो प्लेसेस की गई है वो मार्च 2024 में जो अभी की गई है, चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स ने चौथी लिस्ट निकाली है, जोग्राफिकल नेम्स दिए हैं अरुणाचल प्रदेश को। अप्रैल 2023 में बीजिंग ने थर्ड लिस्ट भी निकाली थी जिसमें 11 प्लेसेस का रीनेम किया गया था। इससे पहले 2017 में 2021 में भी जो है वो लिस्ट निकाली गई थी फर्स्ट और सेकंड, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के एरियाज़ के नाम चाइनीज़ नेम्स दिए गए थे। तो क्यों ऐसा कर रहा है? चाइना बेसिकली अरुणाचल प्रदेश को ज़ैंगनैन कहता है और रिपीटेड रेफरेंसेस देता है कि ये साउथ तिब्बत है।
ठीक है। चाइना की जो स्ट्रेटजी होती है वो ये नाम देकर जो है टेरिटोरियल क्लेम्स देना, ये एक बहुत ही कॉमन स्ट्रेटजी है। और एग्रेसिव क्लेम्स जो है टेरिटरीज़ के ऊपर जब भी करने होते हैं चाइना ने, तो वो हिस्टोरिकल इनजस्टिस का बहाना लगाकर अपने जो है वो क्लेम करना शुरू कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये टॉपिक आपके पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है, अगर उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड कोई ऑर्डर इशू किया है तो उससे उसके अगेंस्ट जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, हाई कोर्ट में नहीं। ठीक है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? आर्टिकल 129 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में, आर्टिकल 215 जो है वो हाई कोर्ट के कंटेक्स्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर देता है इन दोनों कोर्ट्स को। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली सिविल या क्रिमिनल दोनों तरह का हो सकता है। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है कि आपने कोई जजमेंट को नहीं माना विलफुली। ठीक है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में जो है वो आप स्कैंडलाइज कर रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी की, प्रेजुडिस कर रहे हो, जो है आप उसको उसकी इज्जत के ऊपर जो है वो क्वेश्चन डालने की कोशिश कर रहे हो जुडिशरी की। जवाब आप जो है जानबूझकर ऐसे सवाल उठा रहे हो जो कि सही नहीं है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट से लेके जो है फाइन के तक जो है वो जा सकता है। और फेयर और एक्यूरेट रिपोर्टिंग की जा रही है अगर जुडिशल प्रोसीडिंग्स की, और तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता। ना ही फेयर क्रिटिसिज्म किसी जुडिशल ऑर्डर का, वो भी क्रिटिसिज्म जो है वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लंपी स्किन डिसीज़। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन साइंटिस्ट ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस जो है वो टीम ऑफ इंडियन साइंटिस्ट ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस जो है वो रिपोर्ट किया है जेनेटिक मेकअप ऑफ उस वायरस को देखने में जो कि लंपी स्किन डिसीज़ करता है। तो लंपी स्किन डिसीज़ एक इन्फेक्शियस वायरल डिसीज़ है कैटल की। लंपी स्किन डिसीज़ वायरस के थ्रू होती है ऑफ कोर्स। जूनोटिक डिसीज़ नहीं है ये, तो याद रखो ये ह्यूमंस में नहीं आ सकती। एंडेमिक रही शुरुआत में ये डिसीज़ मोस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका में, मिडल ईस्ट और टर्की तक। 2015 में ये स्प्रेड होते हुए बल्कान कंट्रीज़, कॉकेसस और रशिया तक पहुंच गई। 2019 में ये फिर एशिया में भी पहुंच गई। तो ये ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स जो होते हैं, टिक्स, उनके द्वारा जो है ट्रांसमिट होती है एनिमल्स में। इन्फेक्टेड एनिमल्स जो है वो ओरल और नेसल सिक्रीशन से जो है ये वायरस को जो है स्प्रेड करते हैं। डिसीज़ जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी फैल जाती है, कंटेमिनेटेड फॉडर या फिर वाटर से भी। लिम्फ नोड जो होते हैं इन्फेक्टेड एनिमल्स के, उनको ये टारगेट करती है। अगर हम देखें कैटल में तो हाई फीवर देखने को मिलता है, शार्प ड्रॉप देखने को मिलता है मिल्क यील्ड में, लॉस ऑफ एपिटाइट, इनफर्टिलिटी, इवन डेथ भी हो जाती है एनिमल्स की। और ये हाईली होस्ट स्पेसिफिक डिसीज़ है, प्राइमरीली एक काऊ को अफेक्ट करता है। कोई डायरेक्ट एंटी वायरल ट्रीटमेंट तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन वैक्सीन्स जो है वो यूज़ की जाती हैं इस डिसीज़ की ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कलाकडल। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली तो ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट हम इसको एनवायरनमेंट में क्लब कर रहे हैं। ठीक है। तो हंड्रेड्स ऑफ हाउसेस जो है वो फ्लड हुए हैं अभी रिसेंटली कोस्ट ऑफ केरला के पास, क्योंकि हाई सी वेव्स आई जिनको हम स्वेल वेव्स भी कहते हैं, और इनका हम कलक्कडल भी कह रहे हैं। कलक्कडल बेसिकली कोस्टल फ्लडिंग होती है प्री मानसून सीज़न में, जब स्वेल वेव्स जो है साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में आ जाती हैं। तो कलक्कडल जो है वो लोकल फिशरमैन की टर्म है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका लिटरल मीनिंग तो ये हुआ कि ओशन जो कि एक चोरी की तरह से आपके कोस्टल एरिया में आ जाता है। तो इस टर्म को 2012 में यूनेस्को ने भी अप्रूव किया। ठीक है। तो स्वेल वेव्स क्या होती हैं? बेसिकली लॉन्ग वेवलेंथ वेव्स जो सरफेस ऑफ द सी पर देखने को मिलती हैं। ये लोकल विंड्स की वजह से नहीं होती हैं, डिस्टेंट स्टॉर्म्स की वजह से होती हैं, जैसे हरिकेन्स आ गए या कोई फेयर्स गेल विंड्स हैं, तो उनकी वजह से जो है ये सी में हो रही होती हैं। लेकिन ये जो है आते आते जो है ये कोस्ट के पास तक पहुंच जाती हैं और बहुत हाई वेव्स बन के जो है वो कोस्टल एरियाज़ को डैमेज कर देती हैं। तो ये अलग अलग डायरेक्शंस में प्रोपागेट हो सकती हैं, बेसिकली विंड की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑफ कोर्स फ्लैश फ्लड टाइप इवेंट दे देती हैं ये। तो स्वेल सर्ज फोरकास्ट सिस्टम के थ्रू जो कि इनकॉइस ने डेवलप किया है 2020 में, अर्ली वार्निंग जो है वो इसकी दी जा सकती है। अब कलक्कडल जो है वो वेव्स के थ्रू होता है, ऑफ कोर्स स्वेल वेव्स के थ्रू, लोकल विंड्स के थ्रू नहीं होता है, याद रखना। और जो ये स्टॉर्म्स होती हैं जो ओशंस में आती हैं, ये बहुत ह्यूज एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं एयर से वाटर की तरफ, तो फॉर्मेशन ऑफ वेरी हाई वेव्स होता है। तो ये हाई वेव्स जो हैं
थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल करती हुई जो है ये शोर को स्ट्राइक करती है, ठीक है। कलक्कड़ल जो है वो स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन की वजह से होता है, ठीक है। लगभग 2 से 3 दिन लग जाते हैं इन वेव्स को कोस्ट तक पहुंचने में। याद रखो डिफरेंस है कलक्कड़ल और सुनामी में, ठीक है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बनाए गए हैं ऑफ कोर्स इससे डील करने के लिए। कलक्कड़ल बेसिकली एक फ्लैश फ्लड इवेंट है जो कि किसी लोकल विंड की वजह से नहीं होता है, बल्कि सीज़ में जो हाई स्टॉर्म्स आती हैं उसकी वजह से होता है। तो आप याद रखो इसको सुनामी से नहीं कंपेयर किया जा सकता, सुनामी तो जो है वो अलग फिनोमेना है, वो आपका उसमें अर्थक्वेक जो है वो उसकी वजह से आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वाइट रैबिट कोलैबोरेशन। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सन जो है उन्होंने वाइट रैबिट कोलैबोरेशन जो है वो लॉन्च किया है। बेसिकली वाइट रैबिट क्या है, एक टेक्नोलॉजी जो सन ने डेवलप की है जिससे कि इंस्टीट्यूट्स और कंपनीज़ अपने डिवाइसेस को सिंक्रोनाइज कर सकेंगी सब नैनो सेकेंड्स पर, ताकि जो एक कॉमन नोशन ऑफ टाइम है वो अक्रॉस द नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जा सके। तो ये रैबिट स्विचेस बेसिकली सब नैनो सेकेंड सिंक्रोनाइजेशन एक्यूरेसी पे चलेंगे और रियल टाइम एथरनेट नेटवर्क्स को कनेक्ट करेंगे। बेसिकली टाइमिंग जो है उसके लिए इसको यूज़ किया जाएगा और इसको ओपन सोर्स रखा गया है। तो सोचो इसका कितना अच्छा यूज़ हो सकता है फाइनेंस सेक्टर में, कई तरह के रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, क्वांटम इंटरनेट में, ठीक है। तो वाइट रैबिट कोलैबोरेशन क्या है, एक मेंबरशिप बेस्ड ग्लोबल कम्युनिटी है जो कि हाई परफॉर्मेंस ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को शेयर कर रही है। और ये कोलैबोरेशन बेसिकली डेडिकेटेड सपोर्ट ट्रेनिंग देती है, R&D फैसिलिटेट करती है प्रोजेक्ट्स में बिटवीन एंटिटीज़ जो कि जिनका कॉमन इंटरेस्ट और कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पुनेट स्क्वायर। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तो पुनेट स्क्वायर्स बेसिकली वेज हैं कि कैसे हम जेनेटिक आउटकम्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग के जिनके जो पेरेंट्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं उनके जीनोटाइप्स के बारे में हमें पता है, ठीक है। तो ये पुनेट स्क्वायर जो है वो ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट रेजिनाल्ड पुनेट द्वारा बनाया गया। और बेसिकली क्या किया जाता है, एक साइड पर जो है वो एक पेरेंट के जेनेटिक ट्रेट्स लिख दिए जाते हैं, दूसरी साइड पर जो है वो दूसरे पेरेंट के जेनेटिक ट्रेट्स लिख दिए जाते हैं। फिर जो है स्क्वायर्स बनाकर जो है दोनों को कंबाइन किया जाता है, दोनों ट्रेट्स को, और उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटीज़ बताई जाती हैं कि क्या हो सकता है इनके ऑफस्प्रिंग के जेनेटिक आउटकम्स। तो बहुत कॉमन है, ये बायोलॉजी में यूज़ किया जाता है इनहेरिटेंस पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, और क्रॉस ब्रीडिंग से क्या क्या वेरिएशंस या प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी उसको जज करने के लिए या प्रेडिक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है एक टूल की तरह। तो इसको जेनेटिक ट्रेट्स जो एनिमल्स में खासकर जो है ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनकी प्रेडिक्शन के लिए इसको खासकर यूज़ किया जाता है, ओके। So now let us see all these topics in English. So the first topic is powers of the Enforcement Directorate. This topic is important for your governance section. So Supreme Court has recently endorsed the powers of ED and said that this central agency ED can call anybody for any information. So what is ED? It is of course a domestic law enforcement agency and economic intelligence agency which is responsible for enforcing economic laws and fighting economic crimes in India. So the origin of ED goes back to 1956. Initially it was only enforcing the Foreign Exchange Regulation Act of 1947. It comes under the Department of Revenue of Ministry of Finance, and currently it is looking after FEMA, PMLA, and the Fugitive Economic Offenders Act, which was passed in 2018 after the Nirav Modi case, and of course Vijay Mallya case, and many others who flew out of India and they were declared as fugitive economic offenders. Okay, so what is PMLA? PMLA was enacted in 2003, and this act defines the offense of money laundering as to whoever directly or indirectly indulges or knowingly assists anyone else or becomes a party or gets involved himself in any proceeds of crime and tries to project it as an untainted property will be guilty of money laundering. So this act has been amended several times by specifically PMLA Amendment Acts of 2009 and 2012. But PMLA was recently amended through the Finance Acts also of 2015, 18 and 19.
So what are the powers of ED under PMLA? Section 48 and 49 of PMLA empowers ED officers to investigate cases of money laundering. Section 50 subsection 2 of PMLA empowers the ED to summon any person whose attendance is required for giving evidence or production of records in the course of any investigation under the PMLA law. Section 50 subsection 3 mandates that the individual which has been summoned is bound to attend the summons in person or through authorized agents. ED also has special powers for confiscating property under the PMLA Act. Yes, there are certain exceptions. Supreme Court has clarified that ED officials are not equivalent to police officers. Therefore, they cannot make arrests under the PMLA by themselves. They will have to take the court's permission. Okay. So the next topic is India rejects China's renaming of Arunachal Pradesh. This topic is important for your international relations. So India has recently rejected the renaming of some places in Arunachal Pradesh by China as senseless, and the dispute stems from the McMahon line, which is the disputed boundary between India and China in the eastern sector. So what happened in 1913 and 14 period is that the representatives of China, India and Tibet, they met in Shimla during the Shimla conference, and the then foreign secretary of British India, Henry McMahon, drew up this 890-kilometer line as the border between British India and Tibet. Okay, so this line was drawn from eastern border of Bhutan to the Isu Razi Pass on the China-Myanmar border. So the McMahon line moved the British control substantially northwards, and this agreement ceded Tawang and other Tibetan areas to the Imperial British Empire. So the Chinese representatives at the meeting who initiated this agreement, they initially accepted it, but they subsequently refused to accept it. China has been accusing India of occupying areas in Arunachal, and it calls it part of southern Tibet. China also says that there have been historical ties between the monasteries of Tawang and Lhasa, and this justifies the area being called as southern Tibet. So, what is the status of Arunachal Pradesh? So, Arunachal Pradesh border is the largest disputed area, covering about around 90,000 square kilometer. And during the 1962 war, PLA even occupied it, but of course, it announced a unilateral ceasefire and withdrew from that area, respecting the McMahon line. Yet, China has continued to assert its claim over this territory, and nowadays almost whole of Arunachal Pradesh is being claimed by China. So what has happened now is that this is the fourth such list of giving geographical names to areas of Arunachal Pradesh by Chinese side. In April 2023, the third list of 11 places was issued. The first and second lists were issued in 2017 and 2021 respectively. So actually China calls Arunachal Pradesh as Zhangnan, which they call it as South Tibet. And this so-called renaming of areas is Chinese strategy to assert its territorial claims over Indian territory. So laying aggressive claims to territories on the basis of historical injustices done to China is part of China's foreign policy playbook. Okay, of course we can see that what is happening in Taiwan, and now in several disputed islands of South China Sea, especially with respect to Philippines. Okay, so the next topic is contempt of court. This topic is important for your polity section. So Allahabad High Court has recently observed that orders which are issued by a central administrative tribunal under the Contempt of Court Act are subject to appeal solely to the Supreme Court and not the High Court. So what are the constitutional provisions for it? Article 129 of the Constitution and Article 215 gives the corresponding powers of contempt of court to Supreme Court and High Courts respectively. So the Contempt of Court Act was also passed, which defines contempt of court that it can be either civil or criminal. In civil contempt, one person is willfully disobeying the judgment, okay, or direction of the court. But in criminal contempt, the person is trying to scandalize the judiciary itself, or interfering in the
functioning of judiciary. Okay, so this is criminal contempt. Any contempt of court can be punishable with simple imprisonment or with fine or both, of course. And what is not contempt of court? When you are fairly and accurately reporting judicial proceedings, or if you are giving fair criticism on any judicial order, then of course it is not contempt of court but part of your freedom of expression. Okay. So the next topic is lumpy skin disease. This topic is important for your environment section. So a team of Indian scientists, they have made significant progress in understanding the genetic makeup of the virus, which is responsible for the lumpy skin disease. Lumpy skin disease, it's an infectious viral disease of cattle, and it is caused by the lumpy skin disease virus. Of course, it is not a zoonotic virus, which means that it cannot spread to humans, and it is currently endemic in most parts of Africa, parts of the Middle East and Turkey. In 2015, this disease started to spread in most parts of the Balkans, Caucasus, and the Russian Federation, and since 2019, it has been spreading to parts of Asia also. Okay, so including India, of course. So this disease gets transmitted by the blood-feeding insects like ticks, mosquitoes, or flies, and the infected animals shed the virus through oral and nasal secretions. This disease can either spread through direct contact with the vectors or through the contaminated food, fodder and water also. This disease affects the lymph nodes of the infected animal. So, if we can see the symptoms, then it includes high fever, sharp drop in milk yield, discharge from the eyes and nose, salivation, loss of appetite, depression, damaged hides, emaciation, or infertility, abortions. It can even lead to death in animals. So, it is highly host specific disease, and it primarily affects cows and to a lesser extent buffaloes also. So morbidity rate is higher in cattle than buffalo. Currently there is no direct antiviral treatment available, and of course vaccines are used to control disease transmission. So the next topic is Kalakkadal. This topic is important for your environment section, particularly for your geography section, but we are covering it in environment section only. So recently, hundreds of houses have been flooded in several coastal areas of Kerala due to high sea waves, which are also known as swell waves. And these flooding events, are called as Kalakkadal in Malayalam language. Okay, so Kalakkadal is basically coastal flooding events during the pre-monsoon season by swell waves on the southwest coast of India. So this Kalakkadal is a term given by local fishermen, which means that ocean which arrives as a thief and surprises the people. Okay, so that this term has also been formally approved by UNESCO. And what are swell waves? So basically, these are long wavelength waves on the surface of the sea, and they do not occur due to any local wind, but rather due to distant storms like hurricanes, etc. And these swells have a narrower range of frequencies and directions than locally generated wind waves. And these swell waves dispersed from their generation area, so they take on a more defined shape and direction. They can propagate in different directions, and different from the, of course, the direction of the wind. And in India we have already developed early warning systems like swell surge forecast system by NCOIS to give forewarning 7 days in advance about such events. So what causes Kalakkadal? So it is caused by waves like the swell waves, of course, which are the local winds are not responsible for it. So that's why the local people are not aware that certain such events can occur, such flash floods can occur. These are attributable to long distance, huge storms, and huge energy transfer takes place from air into the water, and this leads to formation of very high waves which can travel thousands of kilometers into the from the storm center until they strike the shore. So strong winds in the southern part of the Indian Ocean are called the Kalakkadal, and these generated waves travel north to reach the coast in 2 to 3 days. Okay, so Kalakkadal occurs without any precursor or any kind of local wind activity. So that's why early warning systems are important. Remember, Kalakkadal is a flash flood event which occurs without any noticeable change in local winds. It is not similar to tsunami. Tsunami is a different phenomena. We all know that earthquakes play a major role in tsunami, but this is not the case with Kalakkadal. Okay.
So the next topic is white rabbit collaboration. This topic is important for your science and tech section. So CERN has recently launched the white rabbit collaboration, which is a technology developed at CERN in collaboration with several institutes and companies to synchronize devices down to sub nanoseconds and solve the challenge of establishing a common notion of time across a network. So basically, once you reach sub nanosecond synchronization, it will provide you with this flexibility and modularity of real-time Ethernet networks. It can be used to provide the uh, timing and synchronization of a distributed electronic system. So of course it will be an open source, and it will be based on standards. This white rabbit will be used in the finance sector and in many other research infrastructures, and also in the future quantum internet. So White Rabbit Collaboration is a membership-based global community whose objective is to maintain a high-performance open-source technology, which meets the needs of users and facilitates its uptake by the industry. So this collaboration also provides dedicated support, training, facilitate R&D projects between the entities with common interests, and complementary expertise. Okay. So the next topic is Punnett square. This topic is important for your science and tech section. So Punnett squares basically are the ways to predict the possible genetic outcomes of the offspring when two individuals with known genotypes are crossed. So Punnett square is named after British geneticist Reginald Punnett, and how you use it. So along the top and side of the grid, the possible genetic traits of one parent is written, and on the other side you write the possible genetic traits of the other parent, and then you fill in the squares by combining the traits from each parent and visualize the probabilities of different traits showing up in the offspring. Okay, so basically it's a very common practice which is used in biology to understand the inheritance patterns, and it is of course also a useful tool to predict the variations and probabilities resulting from crossbreeding, and it is also used to understand the genetic traits in the offspring of animals, okay, including humans. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.